I may be a constitutional position, never to leave it vacant, but I am not actually the government. Anyway, very honorable Justice, I don't want to call her retired, Madam Majida Rizvi Sahaba, Trustee Helpline, Mr. Hamid Marker, respected participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Well, let me go through the formal thing that is there on the piece of paper, and then I'll maybe deviate and wish some of you more time. Anyway, I'm highly pleased and grateful to the Consumer Protection Council of Helpline Trust to invite me to chair the session and addressing this gathering, which consists of very learned personalities, particularly related to the subject. I extend my felicitations to Helpline Trust for commemorating the World Consumer Rights Day by organizing its 5th National Conference on putting the consumer first. Government of Pakistan believes in perfect competition and a fair play in the market. The failure of the market forces and lack of perfect competition gives rise to the issue of consumer protection. The government reiterates its commitment to support all positive initiatives that aim at protection of the consumer's right in this regard. The corporate sector in advanced countries have come to recognize that its existence, growth and profitability depends largely on the ever-increasing emphasis on corporate governance, corporate social responsibility, and consumer rights are the outcome of this recognition. In the highly competitive and global environment of today, Pakistan's economic survival depends on the quality of goods and services it produces and sells both at home and abroad, whether by a giant corporation body or by a small standards. They would succeed by achieving a very high degree of consumer satisfaction. The need for consumer activism. It is heartening to see that the Helpline Trust is taking the initiative and is striving to create the much needed awareness by bringing the government, the corporate sector, the civil society together on one platform to debate the issue and create the awareness. It is making a wonderful contribution. Consumer protection laws may not exist in one province or maybe particularly in Sindh province, unlike maybe the other provinces of Pakistan. The bill I remember was when Mr. Marker and I used to walk the corridors of the assembly when I used to be in the opposition. I still remember him coming and fighting it out with me, trying to convince me, though I was a lady convinced. But somehow or the other, it's just not this 2-3 years but this thing has been pending since many years about certain serious legislations to be done in the assembly so that there is a protection towards the thing called Jago, Sarif Jago, and consumer be put at first. But sir, I can only promise you that maybe I was not very attentive about this before, but having come here and Mr. Marker reminding me of the old times and with a threatening look on his face, I do promise you that we will take this up on priority and have this legislation through the Assembly. Why I say this is because this way we will only be helping our own producers.
You see, consumer, if it loses the confidence on an item, whether it be raw material, from the raw meat, or to the feed that is given to the poultry, if we lose the confidence on that, the consumer, if he can afford it, he will go for something else, which is a quality standard and quality item, and will obviously discourage the local producer that is in the industrial sector, in the corporate sector here in this country. If the consumer feels that he's being deceived, obviously, then it's an open market and they can go anywhere. This will hamper and discourage, whether it be pharmaceutical, whether it be any other. I mean, just list out the things that you have said. Just see that. Talking about, what was that thing? Milk. ये गोश्त है, हाँ? ये सामने गोश्त है, देखिए। किधर सर? स्क्रीन पे। सर मैं नहीं देख रहा हूँ ना, ये देखने में थोड़ी नहीं देख रहा हूँ, ये तकलीफ होती है देखने में सर। ये सारी चीजें जो है ना, ये सब ने जो हमने देखी हैं, ये सारी अब ये दिखाई देती हैं। रोटी कैसे पकती है, मिल्क कैसे तैयार होता है, गोश्त कैसे लाया जाता है, ये सारी चीजें सामने किस तरह से टांगी जाती हैं, किस तरह से मक्खियों की पहले खुराक बनती है, फिर दूसरी बातें होती हैं। ये आदमी जो खरीदता है वो आया पहले उल्टी करे या आंखें बंद करके ले ले, बाकी अगर देखते दिखते अगर कोई लेता है तो फिर तो कहाँ है वो पैकेजिंग जो हम बड़े सुपरमार्केट में सिर्फ देखते हैं कि जी फ्रीजर में पड़ा हुआ है गोश्त और वो प्लास्टिक की थैली में लपेटा हुआ है। कुछ तो प्रेजेंटेशन हो, कुछ तो प्रेजेंटेशन हो कि आदमी को कुछ, यहाँ सारी चीजें जिस तरह से दिखाई जा रही है, इस तरह से कॉन्फिडेंस शेक होता है। मैं मानता हूं कि कंज्यूमर ज्यादातर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, गरीब तबके से भी ताल्लुक रखता है, और यकीनी तौर पर जब वो चाहता है कि कोई दूसरी चीज मिल रही है तो कभी कभी वो दिल करता है कि लेट अस बाय समथिंग व्हिच इज चीपर देन द क्वालिटी स्टैंडर्ड। आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बट हेल्दी थिंग्स, cleanliness is the least that you can do. Clean pots and cleanliness is the least thing that one can do. Now this is where it comes to. This is a fight between the consumer and the producer. This is, I mean, there is a moral obligations on both sides. There is a moral obligation on both sides that what are we trying to do? What are we trying to depict Pakistan as? I mean, counterfeit. Sort of a second class of medicine, B type, number two has become a trademark in this thing. Number two cheezein. Why do we do this? Producers, या कहीं दुकान पे चले जाओ, एक तो वो बुक कीपिंग नहीं करेंगे, अंडर द टेबल बेचेंगे, अंडर द टेबल पैसे लेंगे, हम खुश होंगे कि जी सस्ती चीज मिल रही है, उसके अंदर पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब एस्प्रो खाओ और वो असर न करे क्योंकि पाउडर उसमें मिला हुआ है। मिर्ची लो और ऐसी लो कि उसमें ईंट घुसी हुई हो और पीसी हुई हो। This is all injurious. I mean, ये सारी चीजें हमारे, we are at that primary level. I give you an interesting thing that it came in the assembly about the bottled water, जिसको हम क्या कहते हैं जी? Mineral water. Mineral bottled water का issue आया और वहां कहा गया कि जी contaminated water मिल रहा है। सामने देखे हो रहा है, उस सामने पैक हो रहा है। मैंने उस पे ये कहा कि भाई अब बैठ के असेंबली के मेंबरान जरा सोच विचार में पड़ गए कि होना क्या चाहिए। तो मेरे मुंह से बेख्याल निकल गया कि भाई ये बॉटल्ड वाटर जो भी हो, उसमें अगर हम कम से कम चीज के कंपोजिशन हर बॉटल पे लिख दी जाए तो एटलीस्ट कंज्यूमर के पास एक प्रूफ आएगा कि इस पानी में अगर कहीं खराबी है तो उस पर वो केस तो कर सकता है कि जी इसमें हमने एनालाइज करवाया और ये किया और ये कंपोजिशन ये नहीं थी
और हमारा केस बनता है और कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो जाता है, जो पानी पीने से उसका हाजमा कभी खराब अगर हो जाए तो कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो द मिनिमम थिंग्स जो देखनी चाहिए क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, वो अब प्रोड्यूसर नहीं कर रहे, और ये बस रहम करम पे छोड़ा गया है कंज्यूमर को कि ही इज एट द रिसीविंग एंड, ही इज एट द रिसीविंग एंड। अब उस रिसीविंग एंड में एक्टिविज्म हमने मीडिया की भी देख ली, हमने आई एम सॉरी कुछ और लोगों की भी देख ली। आप तो रिटायर्ड है ना अभी, आप तो भी रिटायर्ड है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ठीक है। तो एक्टिविज्म कंज्यूमर तो एक रिसीविंग एंड में है, बहुत ही उसकी फीबल आवाज होती है, उसकी मजबूरी होती है कि वहां जाए, बीमार है तो जाता है मेडिसिन शॉप पे कुछ लेने के लिए कि कुछ ना कुछ शायद उसको आराम आ जाएगा बेचने वाले को, और वो मुझे अच्छी खासी दवाई दे देगा जो असर करेगा, लेकिन कई असर करते हैं, कई असर नहीं भी करते। तो बेसिकली द लॉज नीडेड टू बी देयर, basically the laws are needed to be there so that at least you can make a case out of it। अब वो legislation के लिहाज से I am sorry because if Sindh has taken a little longer to have this law enacted, I understand you must be quite concerned about this। I will try and do it the very first thing that अगर आपके पास कोई पहले से बिल तैयार किया पड़ा है, अगर मुझे मेमोरी लूज हो रही हो, अगर मेरे से मार्कर साहब फिर भी थोड़ा सा मिल लें, अगर वो उस तरह की कॉपी या कोई मैं सेक्रेटेरिएट से भी निकाल लूँगा सर, उसको निकाल के फिर उसको we can sit together again, we can call the law secretary and let it be passed from the treasury benches rather than wait for any private member to take up a private members. We can do this from the government side. Because what is the government there for? What is the government there for? Government is there to protect the consumer. Government is there to give a guideline to the producer to keep the quality intact so that they can compete in the world market also. I mean, Pakistan is just not there, and you don't sell it to locally only. You import also. You export also. So many things can do that. Sir, मैं समझता हूँ बात तो वही है सर कि हम इसको और ज़रा फेमस करें। ये सारी चीज़ें आपने ये सारा कुछ कर लिया है। You are in fact, you can be looked up to and looked down upon also, because you are doing, you are a bridge between the consumer and the producers. और bridge को बहुत ख्याल से चलना पड़ता है। आप अपने ऊपर ये ली है जिम्मेदारी, आपने बाकायदा हेल्पलाइन का नंबर तक भी दिया है कि कोई कंप्लेंट हो तो हमें बताया जाए कि हम फिर अप्रोच करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट करा सके। दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। और ये सारी चीज़ें करते हुए why not? Okay, let the Mr. Hamid Marker be called another ED to do this thing for good of all the society actually. और उसमें पाकिस्तान का नाम बेहतर होगा, उसमें हम क्वालिटी स्टैंडर्ड में अगर चले जाते हैं तो फिर अच्छी बात है कि जी हमने क्वालिटी को मेंटेन किया और किसी की वजह से किया। तो मार्कर साहब, there's every day, any day, नेकी करने के लिए कोई दिन मुकर्रर करना नहीं है, इसलिए आपने अगर नेकी के लिए दिन मुकर्रर कर लिया है और शुरुआत की है तो मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ, आई कैन विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ and I extend you my fullest of cooperation whenever and wherever you need me. I'll do this. I'll take it up with Mr. Raza Rabbani also, who's the chairman of the 18th Amendment Constitution. If some laws to be made on a federal level for quality maintenance, standard maintenance, I'm sure he will not be so negative about it. And he is a man of commitment, and the man has done something. We can cherish the fact that, yes, there was a constitutional amendment which has been enacted and being implemented. Devolution is necessary, but there are certain things to be done at the federal level. It should be done.
Because the government of today, I may be a part of the government or not, but I do belong to that party which is the government, and it is my firm belief that the government has shown its utmost commitment to the things that their founders have done. The founders of today's government lived for the people and died for the people. So